Bismillahirrahmanirrahim. I am Saqib Rashid. I am your English teacher. I belong to Greenwich Grammar School and College, Peshawar. Now we are going to read lesson number 1, the last address of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All glory be to Allah. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं. There is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Prophet of Allah. Rose the cry from the heart of the Prophet and mingled with the vast expanse of the desert of Arabia. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. ये आवाज़ रसूल पाक के दिल से उठी और सहराए अरब के एक वसी इलाका में फैल गई. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on Monday, the 12th Rabiul Awwal, 20th April, in the year AD 571. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए. He belonged to the family of Quraysh, the nobility of Arabia. आपका ताल्लुक कुरैश के ख़ानदान से था जो अरब के शुरफा थे. His family is traced back to हज़रत इस्माइल एंड इब्राहीम. आप सल्लम का शजरा नसब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है. His parents died by the time he was 6 years of age. आप सल्लम अभी 6 बरस के हुए थे कि आप सल्लम के वालिदैन वफ़ात पा गए. His grandfather Abdul Muttalib took charge of him, but he also died soon. आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, लेकिन वो भी जल्द ही फोत हो गए. Now the responsibility of looking after the Prophet sallallahu alaihi wasallam fell to his uncle Abu Talib. अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की जिम्मेदारी आप सल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब पर आ पड़ी. He loved his young nephew dearly and did all he could to rear him well. इन्हें अपने नौजवान भतीजे से बड़ी मोहब्बत थी और वो आप सल्लम की आला परवरिश के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया. The Prophet sallallahu alaihi wasallam grew up to be so honorable and trustworthy that people called him Al-Amin. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होकर इस कदर काबिल एहतराम और काबिल एतमाद शख्स बन गए कि लोग आप सल्लम को अल-अमीन कहने लगे. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to retire to and pray in a cave in Mount Hira for some days every year. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल चंद दिनों के लिए गारे हिरा में गोशा नशीन हो जाते थे और इबादत करते थे. During the last days of Ramadan, the most wonderful thing happened to him. माह रमज़ान के आखिरी दिनों के दौरान आप सल्लम के साथ एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया. Through the angel Jibreel, God revealed to him the true religion Islam, the belief in the total submission to one true and the only God, the most merciful and the mighty. अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के ज़रिए हकीकी मज़हब इस्लाम आप सल्लम पर ज़ाहिर किया. इस्लाम का मतलब एक सच्चे और सिर्फ एक ही खुदा की मुकम्मल इताअत पर ईमान लाना है जो बड़ा रहम करने वाला और ताकतवर है. Thereafter the Prophet sallallahu alaihi wasallam spared no effort in preaching the true religion. इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे मजहब की तबलीग करने में कोई कसर न उठा रखी. He suffered great hardships, but nothing could move him from his chosen path. आप सल्लम ने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन कोई चीज़ भी आप सल्लम को आपके मुंतखब रास्ते से ना हटा सकी. Hundreds of people embraced Islam at the hands of the noblest of men. सैकड़ों लोगों ने शरीफ तरीन इंसान के हाथों इस्लाम कबूल किया.
When the Prophet sallallahu alaihi wasallam realized that his end was drawing near, he felt the intense need of conveying the people his final message. जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह महसूस किया कि आप सल्लम का आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो आप सल्लम ने लोगों तक अपना आखिरी पैगाम पहुंचाने की शदीद ज़रूरत महसूस की. Before performing his last pilgrimage at Makkah, he decided to address the faithful. मक्का में अपना आखिरी हज अदा करने से पहले आप सल्लम ने अहले ईमान से खिताब करने का फैसला किया. While riding on a she camel near the Jabal al-Arafat, the Prophet sallallahu alaihi wasallam spoke these unforgettable words on the 9th day of Zulhijjah to the assembled people. 9 जुल्हिज्जा को जबल अरफात के करीब एक ऊंटनी पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा होने वाले लोगों से इनके नाकाबिले फरामोश अल्फाज में खिताब फरमाया. Listen to my words, for I do not know whether I shall be granted another year to be amongst you. मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि मुझे तुम्हारे दरमियान रहने के लिए एक और साल मिलेगा या नहीं. Your lives and properties are a sacred trust amongst yourselves until you appear before the Lord. And remember, you shall have to appear before your Lord, who shall demand from you an account of all your actions. तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल तुम्हारे दरमियान एक मुकद्दस अमानत हैं, यहाँ तक कि तुम अपने खुदा के सामने पेश होगे. और याद रखो कि तुम अपने खुदा के सामने ज़रूर पेश होगे, जो तुमसे तुम्हारे तमाम आमाल का हिसाब किताब ज़रूर तलब करेगा. You have rights over your wives and your wives have rights over you. तुम्हारा तुम्हारी बीवियों पर हक है और तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक है. Treat them with kindness and affection. इनसे मेहरबानी और मोहब्बत का सलूक करो. Be faithful to each other and do not commit sins. एक दूसरे के साथ वफादार रहो और गुनाह न करो. Interest on the loans is forbidden to you. कर्जों पर सूद लेने से तुम्हें मना किया गया है. No murders committed during the days of ignorance are to be avenged. जाहलियत के दिनों में होने वाले कातिलों का बदला न लो. Do not forget that every Musliman should be truly a brother to every other Musliman. ये मत भूलो कि हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का सच्चा भाई होना चाहिए. There is no preference for the Arab over the non-Arab or the non-Arab over the Arab. अरबी को गैर अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं और ना ही गैर अरबी को अरबी पर. There is no preference for the Arab over the non-Arab or the non-Arab over the Arab. अरबी को गैर अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं और ना ही गैर अरबी को अरबी पर. Feed and clothe your slaves with such food as you eat yourselves and with such clothes as you wear yourselves. अपने गुलामों को वही खाना खिलाओ जो तुम खुद खाते हो और वैसे ही कपड़े इन्हें पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो. If they commit a fault which you find hard to forgive, let them go away and do not treat them harshly. अगर वो कोई ऐसा कसूर करें जिसे तुम्हारे लिए माफ़ करना मुश्किल हो तो इनको आज़ाद कर दो और इनसे सख्ती का सलूक न करो. Be kind and just to everyone. हर एक से मेहरबानी करो और इंसाफ से पेश आओ. O people, ऐ लोगो, have I fulfilled my mission? क्या मैंने अपना मकसद हयात पूरा कर दिया? In truth you have, replied the 100,000 mouths of the pilgrims. वाकई आप सल्लम ने पूरा कर दिया है. हाजियों के 1,00,000 मुंहों से यही जवाब निकला. O God, be thou my witness, said the Prophet sallallahu alaihi wasallam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ए खुदा तू मेरा गवाह रहना. So that is the end of the lesson. Now we are going to start the exercise of the lesson. We have question number 1. When was our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam born? The answer is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born on Monday, the 12th Rabiul Awwal, 20th April in the year AD 571. Question number 2. Who were the Quraysh? The answer is the Quraysh were the nobility of Arabia. Question number 3. Trace back the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The answer is we may trace back the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to Hazrat Ismail alayhi salam and Hazrat Ibrahim alayhi salam. Question number 4. Why did people call our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Amin? The answer is people called our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Amin because he grew up to be very honest, honorable and trustworthy. Question number 5. Where and through whom did our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam get the revelation? Answer. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got the revelation through the angel Jibril in a cave in Mount Hira. Question number 6. What is meant by Islam? Islam means belief in the total submission to one true and the only God, the most merciful and the mighty, and to believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. Question number 7. What was the name of the mountain where our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to retire and pray? Answer. The name of the mountain where our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to retire and pray was Mount Hira at Mecca. There was a cave in it where he used to retire for some days every year. Question number 8. Give the main ideas of the last address of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in your own words. So the answer is the main ideas of the last address of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are as under. Number 1. Our lives and properties are a sacred trust among yourselves until we appear before Allah. Number 2 point. Husbands have rights over their wives and wives have rights over their husbands. Number 3. We ought to be faithful to one another and should not commit sins. Point number 4 is interest on the loans is forbidden to you. Point number 5. Islam does not allow racial superiority. Number 6. Slaves should not be ill-treated. Question number 9. What does the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam say about slaves in his last address? Answer. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says about slaves in his last address that they should be given the same food as we eat ourselves. They should be given the same clothes for wearing as we wear ourselves. Even when they commit a fault, they should not be ill-treated. Question number 10. What does the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam say about brotherhood among the Muslims? The answer. About brotherhood among the Muslims, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says that every Muslim should be truly a brother to every other Muslim.
We have B part. Choose the right one. Number 1, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on, the option is number A, Sunday the 12th Rabiul Awwal. B option is Monday the 12th Rabiul Awwal, and the C option is Monday the 13th Rabiul Awwal. So the right answer is B, Monday the 12th Rabiul Awwal. Number 2, his parents died by the time he was, A option is 5 year of age, B the 7 year of age, C 6 year of age. So the answer is C, 6 years of age. Number 3, Allah revealed to him the true religion Islam in the month of, A is Shawwal, B Muharram, and the C option is Ramazan. So the right answer is C, Ramazan. Number 4, the Quraysh were A, the ruler of Arabia, B, the nobility of Arabia, and the C option is ordinary people. So we have the right answer B, the nobility of Arabia. Number 5, the name of the mountain where Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to pray was, A option is Jabal al-Tariq, B option is Mount Hira, and the C is Mount Medina. So the right answer is B, Mount Hira.